तो हम ह्यूमन आई की फर्स्ट असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज अ बेसिक असाइनमेंट जस्ट कवरिंग द ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. सो सिंपल असाइनमेंट है, ज्यादा कुछ भी नहीं, बेसिक क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच लिक्विड फिल्स द स्पेस बिटवीन बिहाइंड द कॉर्निया. तो हमने पढ़ा था, अगर आपको आई का डायग्राम याद हो तो वी हैव टू डिफरेंट सेपरेटर लिक्विड्स. कौन कौन से थे? एक तो जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता था, विच वाज aqueous aqueous OUS humor, and then other one which filled the rest of it was what was that? PITROUS, just humor. Okay, so ये हमारे पास दो लिक्विड से जो फिल करते थे. तो अगर आपको कॉर्निया के बिहाइंड पूछा गया है तो ये वाला सेक्शन की बात हो रही है, तो दैट वुड बी aqueous humor. Okay, aqueous humor filled behind a space in the cornea. Again, they could have also written directly the one word answer, but as I keep on repeating, you have to write a whole complete statement whenever you write an answer. Next, which part of eye controls the amount of light entering the eyes? So that is the pupil. Okay, pupil controls the amount of light. And how is pupil controlled? Iris करता है ऐसे. Iris करता है तो basically pupil controls the amount of light entering the eyes. And pupils क्या, pupil क्या होता है? Pupil तो सिर्फ opening है. So pupil iris के through. Again, iris would also not be an incorrect answer. Both of them, because iris and pupil are in conjunction working together. Pupil is just the name of opening. Iris is the muscle responsible for it. You can see that. It's just the opening. Iris is the one doing all the work. Next, how is the sense of vision carried out from eye to brain? Through the optical nerve, sense of vision is carried out to the brain. So हमारा जो sense of vision, it's not just the vision we are talking about. We are talking about the sense of vision. The sense of vision किसके through जाएगा? Optical nerve की वजह से. तो जो हमारे cones and rod जो retina में present होते हैं, उस पे sense करके will sense the light, and then it will go through optical nerves through our to our brain. Not, I thought it's about vision, it's not the sense. Yeah. Electricity, electrical impulses, not electricity, electrical impulses. There's a difference. Yeah, electric signals and electricity, different things. Impulses. Impulses में and electricity में difference होता है. Electricity is a continuous flow, not an impulse. पढ़ेंगे तब समझ आएगा. Anyways. Why is the blind spot slow called? तो blind spot क्यों होता है? पहली बात exist क्यों करता है? Because there is a place where the optic nerves meets the retina. और इस जगह पे there are no Monson rods or sensory cells. तो इसलिए an image is formed at this point is not sent to the brain. तो basically अगर इस point पे कोई भी image form होती है तो वो हमें नहीं दिखेगी कभी भी. It will not be sent to the brain because there are no sensory cells. Next. What is meant by far point? Far point meaning the furthest point up to which a normal human eye can see objects clearly. And for a normal human eye, the far point is infinity. Infinity for normal human eye, not for all types of eye. Next, when you enter from a bright sunshine into a dark room, you're not able to see clearly. Why? So basically, हमारे eyes को क्या चाहिए? Time to adjust. So it's not just because our pupil had become small. So basically, our pupil is already small and it needs time to adjust the size of pupil. नहीं डिम, हाँ, आई गेट योर पॉइंट कि आप बोल रहे हो कि डिम लाइट में हमें दिख. ये कुछ और कह रहे हैं. ये कह रहे हैं अगर हम ब्राइट लाइट से नॉर्मल लाइट में आते हैं तो भी हमें काफी बार दिखता है. तो अगर आप बहुत तेज धूप से आप नॉर्मल अपने रूम की ट्यूबलाइट में भी जाते हैं तो भी आपको काफी बार यू कैन नॉट सी दैट क्लियरली. एंड अगर डिम लाइट वाले रूम में जाते हो ऑब्वियसली प्रॉपर्ली लेटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
प्रोड्यूस नहीं होता है, कौन सा नॉट प्रोड्यूस, कौन सा ऑलरेडी देयर, कौन सेंस कर रहे हैं, देयर नो, कौन सा सेल्स वो प्रोड्यूस थोड़ी होते हैं, आगे नहीं आते। बेसिकली आपकी अगर स्क्रीन है रेटिना, तो रेटिना पे ऐसे रैंडम वालों हम येलो से कोन्स डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर डॉट्स हम डिनोट कर देंगे ट्रायंगल से, ठीक है, सो या फिर स्क्वायर से मान लो, तो ये रॉड्स है हमारे। तो ऐसे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हर टाइम, हर टाइम एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट एनहांसिंग, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। जो लाइट आती है वो उसे सेंस कर पाते हैं, जो डिम लाइट होगी उसे सेंस नहीं कर पाएंगे, दूसरी लाइट को सेंस कर पाएंगे, तो इट्स जस्ट प्लेस्ड अपॉन इट, इट्स लाइक पिक्सेल्स इन अ कैमरा, जस्ट सेट अपॉन इट। नेक्स्ट ऑन व्हाट फैक्टर द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, या एग्जैक्टली, तो बेसिकली जो हमारी लाइट है वो हमारे पार्टिकल्स कलर, जो हमारी लेस फ्रीक्वेंसी या फिर मोर वेवलेंथ वाले, मोर वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स है, वो क्या होंगे, कम स्कैटर होंगे, तो दे विल बी लेस scattered. So the color of scattered light depends on the size of scattered particles. अच्छा नो सॉरी, अगर आपको याद है मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, अभी आपको याद आएगा, स्कैटरिंग जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें दो पॉइंट्स पढ़े थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू लार्ज पार्टिकल्स, है ना, एंड हमने पढ़ा था वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जैसे एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब लार्ज इनफ पार्टिकल्स होते थे तो हम क्या बोलते थे, ऑल लाइट स्कैटर्ड। तो बेसिकली जो कलर ऑफ वाइट हमारी स्कैटर्ड लाइट होती वो क्या होती थी, व्हाइट, क्योंकि सारी लाइट स्कैटर हो गई, तो व्हाइट होती थी। एंड जब स्मॉल पार्टिकल्स होते थे, सो वी ओनली सॉ द लोअर वेवलेंथ्स स्कैटर्ड, तो रेड नहीं ब्लू होता था, तो लोअर वेवलेंथ कौन सी है, ब्लू, तो सबसे ज्यादा कौन सी स्कैटर होगी, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि लाइट कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट क्या होगा, वो व्हाइट हो या फिर वो ब्लू हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, सो दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये जब आप दोबारा से एक बार रिवाइज करना कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा, जब हमने स्कैटरिंग करा था तो हमने उसमें दो सेक्शंस करे थे कि स्कैटरिंग दो टाइप्स की हो सकती है, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल एयर मॉलिक्यूल्स, एंड देन दूसरी स्कैटरिंग पढ़ी थी हमने through large enough particles, for example, that of a suspension, that of some big dust particles and stuff. हाँ वेवलेंथ कैसे हो रही है, लेकिन कलर किससे डिटरमाइन हो रहा है, कलर से डिटरमाइन हो रहा है कि हमारे पास जो मीडियम है वो कैसा है, मीडियम में ज्यादा बड़े पार्टिकल्स है ज्यादा ज्यादा छोटे पार्टिकल, लाइट तो सेम ही है, लाइट तो चेंज नहीं है, लाइट तो दोनों केस में हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, तो लाइट का नेचर चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, मीडियम का टाइप। Next, define the dispersion of light, white light. So pretty straightforward definition. The splitting of white light into its constituents, seven colors, is known as dispersion of light. Next, in the part of human eye that helps in changing focal length, so we have ciliary muscles that helps in changing the focal length by contracting or relaxing. If they contract, तो क्या होता था याद है? Contract अगर करेंगे वो, ठीक है, तो क्या होगा? फोकल लेंथ कम होगी, ज्यादा होगी? इमेजिन करो, देखो ये हमारी क्या है, लेंस है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बेसिकली से खींचेगी, ठीक है, तो हमारा नहीं खींचेगी तो ये लेंस फ्लैटन हुआ, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। अगर रिलैक्स करेगी तो विल हैव फोकल लेंथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन, 25 सेंटीमीटर्स टू इंफिनिटी। अगेन काफी बच्चों को लगता है 25 सेंटीमीटर से कम भी हम देख सकते हैं, बट दैट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर आईज। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास यहाँ पे रख के फोन यूज करते हो, यू विल प्रोबेबली हैव सम आई प्रॉब्लम्स वेरी वेरी वेरी। You could say you're not tear enough, but you'll put a lot of strain. You'll have, maybe you might have migraine even. So like I'm not saying it's not impossible कि आपको हो जाए, but again माइग्रेन तो वैसे आपको हेडफोन से भी हो जाता है, if you know that. By the way, it might seem very unreasonable,
बट तुम्हें पता है हेडफोन्स को उसकी 100% वॉल्यूम पे आप दिन में 1 घंटे सुन सकते हो फॉर अ हेल्दी ईयर, एंड उसकी 60% वॉल्यूम पे आप दिन में 3 घंटे सुन सकते हो। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी 3 घंटे से कम सुनता है, लाइक तो बट अगेन what we are doing will eventually have permanent ear damage. That is the truth according to a lot of research. 100 के 1 घंटा पर डे मैक्सिमम, और नॉट द 100 डेसिबल काउंट है, बहुत सारे हेडफोन्स में दे डू नॉट रियली फॉलो द डेसिबल काउंट, सो दे विल गिव अ लॉट मोर वॉल्यूम दैन इट इज परमिटेड टू गिव। सो आपको कभी भी अपनी लाइफ में 60% से ज्यादा पे नहीं सुनना चाहिए वैसे। दैट्स द रीजन कि आपको इवेंचुअली हियरिंग लॉस होगी इन ओल्डर एजेस। हमें काफी बार लगता है कि लाइक अभी कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल से सुन रहे हैं हम, कुछ नहीं होगा। नो, नथिंग विल हैपन इवन फॉर 15 more years maybe, but after that you'll probably have hearing loss, which is very subtle in the sense you'll not know कब हो। anyways, थोड़े गाने कम सुने, ठीक है, आगे बढ़े। which color of white light suffers least deviation and maximum deviation when beam of the least deviation किसकी होगी? red, and maximum deviation violet। एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी सी देखो, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा था, स्टिल दे हैव रिटन द होल लॉन्ग आंसर। The longer wavelength light, which is red, suffers least deviation, and shorter wavelength violet suffers maximum deviation when white light is passed through prism. You have to write down the. How can you change? How can change in size of eyeball be one of the reasons of myopic and hypermetropic eye? Compare the size of eyeball with the normal eye in each case. How does this change in size affect the position of image in each case? याद करते हैं मायोपिक आई में, बोलो साइज मतलब आई का साइज, आई का साइज तो चेंज हो रहा है, तभी तो थिन इसलिए बोल रहे हैं कि साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली से बोल रहे हैं, नॉर्मली से अगर थिन हो या नॉर्मली से ज्यादा बड़ी हो, ठीक है, नॉर्मली से चेंज क्या हो रहा है, तो बेसिकली द आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया हैज लॉन्ग आई बॉल। हमने पढ़ा था मायोपिया के वन ऑफ द रीजंस क्या पढ़े थे हमने? एक तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो लेंस है उसकी क्या इनफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं है, इनफ कन्वर्जेंस नहीं है, या फिर दूसरा रीजन हमने पढ़ा था कि आर आई बॉल इज वेरी लॉन्ग। लॉन्ग होने की वजह से इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सो द नॉर्मल आई than the normal eye, due to which the retina is at a larger distance than the eye lens, तो ये ज्यादा दूर है आई लेंस से। this results in the formation of image in front of the retina. Next, hypermetropia में we either have less less divergence less divergence power of lens, or short eyeball। so अगर हमारी short eyeball or shorter than the normal one, due to which the retina is at a smaller distance from the eye lens, and hence the image is formed behind the retina। बस सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या बनाओ? डायग्राम। टू मेक अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग दैट आपकी क्या हो रही है इस केस में। यू हैव सिंपल डायग्राम बनाना, ज्यादा कुछ काम जान नहीं। तो रेज आई एंड देन दे आर फॉर्मिंग, पहले केस में इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, दिस इज लॉन्ग। हाँ मतलब तीनों बनाओ तो ये अच्छी आदत है, बट अगर ये दोनों ही बना दो, सिर्फ नॉर्मल नोट भी बनाओ तो भी ठीक है। मान लो नेक्स्ट आई बनाते हैं, ये लेंस एंड देन लाइट रेज, ये थोड़ी बाहर जाके इमेज फॉर्म। तो आप ये डायग्राम बनाओगे, विल प्रोबब्ली प्रेजेंट योर आंसर इन अ गुड वे। अगर आता है तभी बनाना, वरना प्लीज डू नॉट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वी माइट नॉट हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। परसिस्टेंस ऑफ विजन की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो सेंसरी सेल्स है ना, दे आर नॉट इंस्टेंटेनियस कि लाइक इंस्टेंटेनियस इन 0.001 सेकंड चेंज हो रहे, नो, दे रिटेन इमेज फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। ठीक है, तो ऑन रिमूविंग the object seen, its impression persists on retina for 1/16th of a second. The inability of human brain to perceive more than two images formed on a retina within an interval of 1/16th of a second is called
persistence and vision. In both case, in this case, both images merge and give a sensation of continuity. इससे तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये फिनोमेना सबसे ज्यादा किस चीज में यूज होगा? दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन मूवीज. तो आप जितनी भी वीडियोस देख पाते हो अपनी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से देख पाते हो? बिकॉज आपकी जो 1/16 ऑफ अ सेकेंड आपकी आई नोटिस कर सकती है चेंजेस. तो वो क्या करेंगे? आपकी फ्रेम रेट्स बढ़ा देंगे, उससे ज्यादा कर देंगे. ठीक है. सो एनीवेयर आफ्टर 32 फ्रेम रेट्स और 60 फ्रेम रेट्स, you would not notice the difference between a series of images or a movie. And in fact, all movies are just series of images. There is nothing else. सारी वीडियो series of images हो. ठीक है. एग्जैक्टली. हाँ, वो परसिस्टेंस की वजह से ही है, बट ऑल्सो बिकॉज आवर आईज आर सेंसिटिव. ये सेंसिटिव तो ज्यादा बिकॉज अगर ज्यादा लाइट कर दी तो ज्यादा सेंसिटिव हो गया. सो अगेन इट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी. सो गिविंग टू मच एनर्जी कैन अगेन हार्म कर इट. दैट्स द रीजन की ब्लू लाइट के तो अलग रीजन होता है थोड़ा सा, लेकिन अगेन टू मच एक्सपोजर टू ब्लू लाइट कैन हार्म योर आईज. और स्पीड में नो, नॉट. बिकॉज हमारा आई अंडरस्टैंड दिस एज अ वे कि आप मान लो एक सेकंड में 16 समोसे खा सकते हैं. तो मैं अगर एक सेकंड में तुम्हें 100 समोसे भी दूं, तुम कितने खाओगे? 16. मैं 200 दूं, तुम कितने खाओगे? 16. यू डोंट रियली केयर कितने भी समोसे खा रहे हैं, आप खा ही 16 सकते हैं. सिमिलरली हमारा आंख देख ही 16 सकता है. तो नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू चेंज अदर थिंग्स, इट वुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन आवर आईज ऑब्वियसली, नॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन. अभी बताया तुझे. 16 पर सेकंड, 1/16 ऑफ अ सेकंड अगर कर रहा है तो एक फ्रेम 16 frames per second. But again, this does not mean you would not notice the change in frames. That is a different thing. Why would we notice that? Not in the purview of our discussion. आगे बढ़ते हैं. Explain how a normal human eye is able to see distinctly the object placed at a distance as well as those placed in near distance. This is known as the power of accommodation. Power of what is the far point and near point of normal human eye? ठीक है. So इन्होंने बस power of accommodation को ही explain कर रखा है. So the muscles change the curvature of eye lens as per requirement of the eye. This changes the focal length of the eye lens. When muscles are relaxed, the lens becomes thin, distance object seen clearly. अभी हमने डिस्कस करा, रिलैक्स है, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी थिन होने की वजह से, हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे. लेकिन हमें अगर क्लोजर ऑब्जेक्ट देखने हैं तो मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, एंड देन हमें पास के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे. पॉइंट इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25. ठीक है. List two causes of myopia of the eye. Draw ray diagram to show the image formation in each case and correct it. Again, we do not need to discuss this question. हमें पता है कि myopia के दो causes क्या होते हैं? Elongation of eyeball and then इन्होंने दूसरा curvature of वो दे रखा है, but we have studied. हाँ, we have high converging power of lens पढ़ा. We have studied high excessive excessive. Again, this could be one of the reasons. I'm not saying this is not one of the reasons. I'm just mentioning the reasons हमने पढ़े. So we have studied the other reason as excessive. या स्लैश देके लिख लो, इसको कट क्यों करना है? दोनों में फिनोमेना तो सेम ही होगा. स्लैश देके लिख लो, excessive convergence. और ध्यान से सुनेंगे, दोनों में फिनोमेना सेम क्यों है? क्योंकि कॉर्निया ज्यादा कन्वर्ज करे, आपकी आईलेंस ज्यादा कन्वर्ज करे, दोनों में होगा क्या? इमेज फॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. तो ऑप्टिकली ऑप्टिकल फिनोमेना दोनों एग्जैक्टली क्या हुए? सेम. ऑप्टिकल फिनोमेना दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए यू कैन राइट दिस एज स्लैश रादर देन कटिंग इट डाउन. सो लाइक इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. अगर कॉर्निया भी हमारा ज्यादा कर्व्ड है तो वो ज्यादा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा रेज, विच वी डू नॉट. तो दोनों रीजन डायग्राम्स दोनों में बनाना जरूर है. करेक्शन ऑफ मायोपिक लेंस इन्होंने दिखा रहे हैं. कैसे कौन सी लेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे? अगेन डू मेंशन कॉनकेव लेंस एंड देन यहाँ पे इमेजेस. नेक्स्ट
none of the numericals. A person needs a lens of power minus 2.5 diopters for correcting his vision. Name the defect in vision he is suffering from. What is the lens he'll be using for correction? Also find the focal length of lens. What simple question है, not that complicated. सबसे पहले पावर माइनस 2.5 दे रखी है, ठीक है. लेंस पावर चाहिए इसे, तो कौन सा लेंस चाहिए इसे? टाइप ऑफ लेंस नेगेटिव कॉनकेव लेंस, ठीक है. नेक्स्ट, फोकस निकालना है हमें. फोकस में क्या कहते हैं? 1/p, ठीक है. लेकिन p इन मीटर्स होता है, हमेशा याद रखना. तो प्लीज कन्वर्ट, प्लीज जो भी भूल जाते हैं याद रखना. हेलो एरिक, याद रखना मीटर्स नहीं, ठीक. और किसी ने तो नहीं करा था. नेगेटिव फोकल लेंथ मींस ही यूजेस अ कॉनकेव. नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the sky appear blue? We know that this is because of the scattering of blue light, because blue light has the maximum frequency and least wavelength, due to which it is scattered the most. So that's why the sky appears blue. So इन्होंने लिख रखा है scattering of light is directly proportional to 1 upon lambda to the power 4. You do not need to write this. Okay? हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है ये पार्ट करते हैं. Again, इसमें हमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो we do not need to remember this. Scattering of light means the least wavelength will scatter more and vice versa. Blue light has shorter wavelength and hence is scattered more than the other colors. In space, there is no atmosphere, hence no scattering of light takes place and the space appears black. क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये एग्जैक्टली मैं तुम्हें नोट्स में बता रहा था कि यही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से और कुछ नहीं आता था. Next, why do you observe the difference in colors of sun during sunrise, sunset and moon? Again, इसमें डायग्राम जरूर बनाना. जो मैंने आपको डायग्राम दिया था, याद है? डायग्राम में सन बना रखा था हमने, एंड देन उससे हम लाइट रेज भेज रहे थे, एंड देन वो स्कैटर हो रहे थे मल्टीपल डायरेक्शंस में. ऐसा डायग्राम होगा आपके पास, एक देखना. एंड ये वाला डायग्राम आप बनाओगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और सबसे ज्यादा क्या है? ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाई डू वी ऑब्जर्व द डिफरेंस इन कलर्स ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट एंड नून? नून में किस कलर का होता है? अरे व्हाइट नून में बेटा, दोपहर में तुझे ऑरेंज कब दिख गया? सनराइज एंड सनसेट में ऑरेंज या रेड, जो भी मर्जी. रेड, रेड. ऐसा क्यों होता है? हमने डायग्राम बनाया था, उसको उस डायग्राम से याद आएगा. बिकॉज एटमॉस्फेयर जब सन टॉप मोस्ट पोजिशन पे होता है तो उसे क्या, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ठीक है. एंड जब सन एजेस पे होता है तो उसे क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? रेड के अलावा ऑल अदर कलर्स आर गेटिंग स्कैटर्ड. इसमें भी रेड होता है बेटा. सुबह उठना शुरू करो, दिखेगा, ठीक है. कभी देखा ही नहीं है तुमने? वही यार, ऑरेंजिश येलोस, लोअर वेवलेंथ एंड देन अगर तुम बिल्कुल सुबह देखोगे ना तो ऑरेंज भी दिख. अगेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुमने होराइजन कभी नहीं देखा है. अगर तुम कहीं बीच वगैरह पे नहीं गए तो तुम यहाँ घर पे बैठ के होराइजन नहीं देख सकते, बिल्डिंग से कवर्ड होता है. तो तुम्हें बहुत देर बाद दिखते हैं जो सन निकलता हुआ. पहाड़ों वहाड़ों में भी दिख भी जाए, पहाड़ों में भी नहीं दिखेगा. यू नीड, बेसिकली तुम्हें जिस जगह पे, जैसे डेजर्ट्स हो गए, डेजर्ट्स में देखना कॉमन है. देन सीज के अराउंड चले गए, आप ओशंस के अराउंड चले गए, वहां देखना आसान है. वरना बिल्डिंग्स होगी तो नहीं दिखेगा होराइजन. तो इनका भी आंसर पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, अगेन हाउ वी हैव टू राइट दिस आंसर, पॉइंटर्स में लिखेंगे आप. अगर इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, डज नॉट मीन आपको पैराग्राफ में. So first, during the sunrise and sunset, our sun is at the horizon. Most of the blue light and other light of shorter wavelengths are scattered the most. Second point, only the longer wavelength red reaches to us. That's why sun appears red during the sunrise and sunset. Okay. Next point. At noon, the sun appears white because it is at our head and all wavelength reaches to us due to little of blue and violet are scattered. And distance क्यों? क्योंकि distance क्या है? कम है. Least distance traveled by the light, not white. Okay. Next, draw a neat diagram. Can we draw a neat diagram? I don't think so.
Draw a neat diagram to show the refraction of light through a glass prism and label the angle of incidence and angle of deviation. बस जो डायग्राम करा था। एंड अगेन इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये सारी चीजें को मेंशन करो कौन सा क्या। उन्होंने क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो। उन्होंने बस बोला है लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिविएशन, बट डिड दैट स्टॉप अस फ्रॉम मेंशनिंग ऑल अदर एंगल्स? नो, विल मेंशन ऑल द अदर एंगल्स। नॉर्मल्स के नाम देंगे हम, पॉइंट्स के नाम देंगे हम सारे, इंसिडेंट रे हम बताएंगे कौन सी है, एंगल इन अ प्रिज्म ही मेंशन करेंगे हम, दिस एंगल इन अ प्रिज्म। और ये दे रखा है एंगल, नहीं स्पेसिफिक लेने की जरूरत नहीं, बस एंगल में तो पर डिपेंड करता है कौन से टाइप का प्रिज्म है। दे कैन बी इक्विलेटरल प्रिज्म, दे कैन बी एंगल से 90 डिग्री, तो कुछ भी हो सकता है। अगेन वी डू नॉट हैव टू डू एनी कैलकुलेशंस इन दिस चैप्टर, सो यू डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग अबाउट एंगल इन प्रिज्म स्पेसिफिक पे क्या होता है। Next question, again a repetition of question. So what is the power of accommodation? Again, repetition of question does not mean आप करोगे नहीं हो. This is assignment is simply to make you learn all these questions. इस चैप्टर से ज्यादा अलग अलग क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आएंगे, और भी एक दो अलग आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, बट अगेन ये मेजॉरिटी समझे। What is the power of accommodation? The power of accommodation is the power of eye to adjust its focal length for seeing distant and near objects. So this is power of accommodation. Next, what happens when image distance? What happens to image distance when the object views is moved away from the eye? तो क्या होगा image distance? सोच के देखो क्या? Does not change. Very good. क्योंकि रेटिना और लेंस के बीच में क्या है? सेम डिफरेंस है, और वही क्या डिटरमाइन करता है। चलो ऐसे डायग्राम से आपको और अच्छे समझ आएगा। तो मान लो ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, यहाँ पे have आई लाइक दिस, यहाँ हमारा लेंस है, एंड देन इमेज कहाँ फॉर्म होती है? हमेशा रेटिना पे। सो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस। क्या ऑब्जेक्ट को हम अगर आगे करेंगे या फिर हम पीछे करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हमारी फोकल लेंथ चेंज होगी। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली व्हाट, जैसे लेंस के न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्या होता था, अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करा तो फोकल लेंथ तो कभी चेंज नहीं हो सकती थी, तो हम इमेज डिस्टेंस चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज रेटिना फिक्स डिस्टेंस पे ही रहेगा आई से, तो दिस विल नेवर change. So first answer, power accommodation means the ability to change focal length of eye lens to see near and distant object. और next point का आंसर क्या है? Image distance remain fixed, which is equal to the distance between retina and eye lens. Next. ये सारे बस डेफिनेशन वाले पार्ट्स है, आप ये कंप्लीट कर लेना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? आपको कॉर्निया का पता है, आइरिस का पता है। कॉर्निया का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन एंड थोड़ी सी कन्वर्जेंस में हेल्प करना। नेक्स्ट, आइरिस का क्या फंक्शन है? कंट्रोल द प्यूपिल। कंट्रोल प्यूपिल मतलब कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। नेक्स्ट, क्रिस्टलीन लेंस। क्रिस्टलीन लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस फोकल लेंथ कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन वो फोकल लेंथ कंट्रोल कौन से करेंगे? वो सिलियरी मसल से कंट्रोल करेंगे। Next, why does the sun appear reddish early in the morning? And by the way, these are all 5 marker questions. Yes, I guess यहाँ से 5 marker questions. So why does the sun appear reddish early in the morning? Again, हम कर चुके already discuss. Will this phenomena be observed by astronaut on the moon? तो नहीं है, because there is no atmosphere to scatter light. But then का answer functions आप देख लेना। Point 1, during morning and evening time, the sun is at the horizon. Sunlight has to travel longer distance in atmosphere, while in blue colors, etc. of shorter wavelengths scatter in the space. Only the longer wavelength red color reaches observer eyes. And third point, or the second part of this question. So we have third point with the second part. So no, because there is no atmosphere on moon and no scatter of light takes place. Okay. Next question, with the help of a suitable diagram, explain why the sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise, 2 minutes after the actual sunset. तो यहाँ पे आपको कौन सा डायग्राम बनाना है? Delayed sunrise and you have already made it in notes. Delayed sunrise, sorry, early sunrise and delayed sunset. Early sunrise and delayed sunset. डायग्राम आप बनाओगे, कौन सा डायग्राम? आपको याद दिलाता हूँ। समथिंग लाइक दिस।
अगर यहाँ पे एक्चुअल एक साइड की बनाता हूँ मैं सर, ये एक्चुअल पोजीशन थी बट रिफ्रैक्शन की वजह से सन कहाँ पे दिखेगा, जो ऑब्जर्वर है से सन लाइन ऑफ साइट में स्ट्रेट यहाँ दिखेगा, दिस इज रियल पोजीशन एंड दिस इज apparent position. बट अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन एंड ऑलरेडी मैं आपको उसका आंसर भी लिखा चुका हूँ, इनका भी पढ़ लेते हैं. The duration of the day becomes approximately 4 minutes longer due to atmospheric refraction. You can see the sun when it is below the horizon in the morning. The rays of sun below the horizon reach our eyes due to refraction of light shown in the actual horizon. Similarly, sun can be seen 2 minutes. So a better answer would be जो आपको notes में दिया गया है. Prefer writing that rather than this. उन्होंने भी diagram दे रहे हैं. We have a better diagram. Do not use this diagram. Do not. State the cause of dispersion when white light enters the glass prism. This cause of dispersion is different angle of deviations for different frequencies of light or different colors of light. So each color or each frequency of light has its own angle of deviation, because of which it gets separated through a glass prism. Point. And white light passes through prism, it splits into constituent color because each color light has different speed in the prism. Again, speed की वजह से ही change in क्या होता है? Angle of deviation. So it is a better point to write about the speed. Second, prism has different refractive index for these light rays, so that deviates through different angles and emerge out of the prism. Deviation of violet light, shorter wavelength is the most, and red color deviation is the least. आपने डायग्राम भी बना दिया. यहाँ पे डायग्राम में आपको कलर्स नहीं बनाना है, आपको सिंपली बस बताना है रेड एंड देन सिर्फ एरोज बनाने हैं, नथिंग. एरोज बनाना बहुत important thing that we have to grasp from here is डिफरेंट. आपको याद है मैंने आपको ये भी समझाया था कि कैसे स्पीड की वजह से डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पीड की वजह से हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, तो वेवलेंथ हैज टू कॉम्पनसेट फॉर इट बिकॉज ऑफ इट्स बेंड आता है. ठीक है. सो अगेन आई हैव एक्सप्लेन दैट. किसी को अगर नहीं याद हो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझ आए आस्क मी अगेन. आगे बढ़ते. 24th, explain the phenomena of scattering of light. State the factor on which the color of scattered light depends. So size of particles अभी डिस्कस करा हमने. Size of particles, scattering of light की definition आप लिख चुके हो, यहाँ पे देख लेते हैं. Scattering of light is a phenomena due to which light gets deflected by the atoms or molecules, और particles भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप. मतलब particles are also molecules, nothing else. So particles of different atmospheric gases, suspended particles present and suspended. They are already mentioned here, so I don't need to mention it. Suspended particles present in the atmosphere, scattering depends upon the size of particles. हमने discuss करा था यार. Next, दो natural phenomena जिसके basis पे होते हैं, reddish color of the sky during sunrise and sunset and blue color of the sky. ये दो phenomena. Next, with the help of a diagram, explain the formation of rainbow in the sky. So इसका आंसर यार मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर लिखना है. वो सबने कर रखा हूँ. फायरिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. अगेन दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर, तो आप ये यूज नहीं करोगे, बट हम ये समझने के लिए कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको मेंशन कराया था ए बी सी डी पॉइंट्स, तो आपको हर पॉइंट पे बताना है क्या हो रहा है. The water droplets of atmosphere act like small prisms. The droplets refract and disperse sunlight. They reflect internally and finally refract it again. It comes out to the raindrop due to distortion of sunlight and internal reflection. Different colors. These two. तो उन्होंने एक समरी दे दी इस पूरे फॉर्मेशन की. You have to write down in a proper manner. आपको पॉइंट्स के नाम देने. A, B at point B it enters the raindrop and then it undergoes refraction first and then dispersion. देन यहाँ पे सी डी बुला लो इसे, पॉइंट सी पे सी डी जगह पे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है टोटल, या फिर यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन आफ्टर विच फाइनली दोबारा बाहर आने के बाद वो रिफ्रैक्शन अंडरगो करता है एंड देन इट रीचेस द ऑब्जर्वर्स आईज.
ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा। द गुड थिंग इज इसमें आपके पास सबके आंसर्स हैं, so I want proper learned answers in the next class. Next class of science we would be starting with metals and non-metals. Before that we will be having a short oral test for, अगेन साथ साथ पढ़ लो, कुछ फॉर्मल टेस्ट मुश्किल टेस्ट नहीं होने वाला, तो बस रिवाइज करके आना है। मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ फॉर्मुलेशन क्या होती है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो बेसिक क्वेश्चन, चैप्टर में मुश्किल है ही नहीं कुछ, तो प्लीज बिना पढ़े मत आना।